हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, अच्छे कर रहे हैं ट्रेडिंग वाइज। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कमोडिटी मार्केट डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। सो ये जो वीडियो है ये बेसिकली टेक्निकल साइड ऑफ द मार्केट दिखा रहा है, बट उससे बिफोर आई गो टू द टेक्निकल साइड ऑफ द मार्केट, एक रेगुलर चीज हम लोग करते हैं, दैट्स टेक अ लुक एट द कैलेंडर। कैलेंडर में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहा है करेंसी कमोडिटी वाइज, वो जानने के लिए आई मेक इट टू स्टार इवेंट्स को एक बार देखेंगे। सो फर्स्ट वन आई कैन सी कि इन्फ्लेशन रेट आ रहा है जर्मनी का, ट्यूसडे नॉट टुडे, मंगलवार को आ रहा है। एंड ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये यूरो करेंसी ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इन्फ्लेशन सच में कम्स ऑन हायर साइड, इट इज एक्सपेक्टेड कि नीचे ही आएगा, एक्सपेक्टेड कि हायर देन बिफोर, बट स्टिल 2% एक लो इन्फ्लेशन है, सो दैट विल बी इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव। एंड अगर अनलेस हाई इन्फ्लेशन होता है दैट विल बी इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव अगर 2% को क्रॉस किया। अगर नहीं हुआ तो bonds are likely to do good, that means interest rate will decline, and that can add pressure on the euro USD. Next we have UK का unemployment rate. This one will be very important कि for जो लोग GBP trade कर रहे हैं। इंडिया का डेटा आ रहा है, बट दिस डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल काउंटर्स, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट फॉर इक्विटीज और इम्पोर्टेंट फॉर इन्फ्लेशन रेट। अगर ऑन द हायर साइड देन आरबीआई विल नॉट बी एबल टू डू रेट कट्स। Wednesday eventful late night or early morning, rather, we can say Tuesday late night. Several Fed speakers are coming up, but most important data for Wednesday, जिसके साथ मेरा live session रहेगा, is US का inflation rate. जो लोग eligible है, you are welcome to join. And full of Fed speakers will continue. Fed speakers मतलब US के central banks के speakers हैं. So this will be the biggest event so far that I can point to. बाकी का रेगुलर डेटा है, दिस इज पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द सीपीआई। और एक राउंड ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट विल बी चाइना डेटा ऑन थर्सडे टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट इट्स हैविंग द लेटेस्ट स्टिमुलस. So stimulus and this data will be impactful for the base metal space. Next, we'll have GDP data from UK, which will be once again important for GBP traders. UK का डेटा आ रहा है, GDP and industrial production, manufacturing production, very important for GBP traders. Great Britain pound like GBP JPY, GBP INR, GBP USD. And finally, we are having on the Friday to end the week with retail sales. This will boost the mood, not a game-changing data, but the most eventful data that I'm finding is coming on Wednesday, which will impact the global markets. अब हम लोग चले जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस में कॉपर, और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप एंड उसके अंडर कॉमोडिटी। सो उसके अंडर कॉमोडिटीज I'll चूज। सो इसको स्विच ऑन कर देते हैं। दिस इज द डेली पिक्चर। डेली पिक्चर में दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर नेचुरल गैस, मेजोरिटी ऑफ द कॉमोडिटीज आर इन डेली चार्ट के हिसाब से इनटू फॉलिंग मोड। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक बहुत ही टाइट रेंज, बहुत छोटा कैंडल, सो कुछ खास नहीं हो रहा है कॉपर में। सो विल बेटर आई विल कंटिन्यू टू अवॉइड doing anything related to copper. It's operating in a very tight range. एल्यूमिनियम सिमिलर, वो भी एक टाइट रेंज में ही ऑपरेट कर रहा है, ऑल द बेस मेटल्स। तो इसमें अगर ट्रेड करने जाएंगे तो फंसे हुए रहेंगे, कुछ डायरेक्शनल नहीं मिलेगा। मे बी नॉन डायरेक्शनल या इंट्राडे प्लेयर्स या स्मॉल प्लेयर्स, स्मॉल टाइम फ्रेम प्लेयर्स, उनको कुछ मिल सकता है, बट ट्रेंडिंग वाइज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग की करने लायक। और 125 मिनट में एल्यूमिनियम हैज बीन वेरी बियरिश, बट डेली चार्ट में इट हैज बीन, और 125 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स था 243, देन वी हैव बेस लेवल जहां पे खड़ा है 241। सो इट्स वंस अगेन वेरी रेंजिश मूवमेंट में है। सिमिलर हम लोग कह सकते हैं जिंक के ऊपर।
ये भी एक रेंज में ही ऑपरेट कर रहा है, सो डेली चार्ट देखने से वो मोर क्लियर होगा। 125 मिनट वी आर हैविंग सेलिंग प्रेशर, सेलर का प्रेशर ही ज्यादा है जिंक में 125 मिनट में, बट डेली चार्ट में अगर जाएंगे तो ओवरऑल इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बियरिश, कैंडल प्राइस एक्शन इज बियरिश। सो नेचुरल बियरिश प्रेशर है, बट देयर आर स्ट्रॉन्ग लेवल्स, सो ज्यादा बड़ा राइड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग विद द जिंक। नेक्स्ट लेट्स लुक एट गोल्ड। गोल्ड हैज बीन सिग्निफिकेंटली वीक, मॉर्निंग से वीक है, रात फ्राइडे वीक था, सो गोल्ड इज लग रहा है कि फर्दर डिक्लाइन होगा गोल्ड में। ये मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका था कि गोल्ड में वीकनेस है एंड इट कैन ड्रॉप टुवर्ड्स ये जो लेवल्स दिखा मार्क किया ऑलमोस्ट आ गया पास 2679। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहा है 2654। सो वेरी लाइकली गोल्ड विल ग्रेजुअली ड्रॉप टुवर्ड्स दैट लेवल। और अगर मूवमेंट स्ट्रांग हुआ तो एम्प्टी लाइन तो आ ही रहा है 2645, और उसके नीचे का रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट 2624 के आसपास। सो 125 मिनट के चार्ट में I'm already bearish in gold. I'm short in gold. And this is the candle, how it is. Overall, we can see from the RSI X, a marginal correction is happening on the up, but gold remains very, very bearish and expected it is going to reach the 2666 and 2654 area. ओवरऑल मेटल स्पेस में कुछ चेंजेस हो रहा है डेटा में 125 मिनट में। डेली में भी सॉ ब्रॉडली मूविंग डाउन, बट स्ट्रेंथ दिखा रहा है सिल्वर, जिंक, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज बुलिश इन बोथ द टाइम फ्रेम्स, डेली एंड 125 मिनट्स। सो गोल्ड के बाद हम लोग देखेंगे सिल्वर, और इसके लिए मैं इंटरनेशनल चार्ट का इस्तेमाल ही कर रहा हूं बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल काउंटर्स। So silver is in a range. देखिए short term momentum has gone bullish. ओवरऑल एक टाइट रेंज में सिल्वर मेंटेन्ड हो रहा है। ये रहा शॉर्ट टर्म एसटी मोमो बुलिश। इफ यू आर नॉट एबल टू सी, लेट मी मेक इट लार्ज ताकि राइट आप देख सके। सो इट इज एसटी मोमो बुलिश, प्राइस एक्शन न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग फाइट चल रहा है, कुछ रेंज कंटिन्यू हो सकता है सिल्वर का, but gold looks much more bearish right now than silver, और silver भी एकदम ही buying like है नहीं, तो I'll maintain bearish outlook in silver unless I get a good buying. And on the upside, silver has now a strong resistance around 32.1 to $32. नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं क्रूड ऑयल में। फुल्ली रेंजिश पिक्चर है, जो 125 मिनट्स में एक धर से बिग फॉल हुआ है, बट ओवरऑल अगर डेली चार्ट में देखूं, मैं पार्टिसिपेशन करने के लिए तैयार नहीं हूं। इट्स अ मिक्स मार्केट। कैंडल देखिए, इट्स अ बिग, वेरी बिग, मींस स्टॉप लॉस हैज गॉन डाउन, सो इट्स इन अ रेंज। द क्रूड ऑयल बाइंग कैन कम लेटर ऑन, बट सेलिंग और बाइंग का एक मिक्स फाइट चल रहा है, स्ट्रॉन्ग फाइट इन क्रूड ऑयल। ये सब सिचुएशन में मुझे थोड़ा क्रूड ऑयल एंड अदर्स अवॉइड करना ही बेहतर लगता है। सो my focus will be on the gold right now. Other markets have started doing some rangish activity. The one that has gone well is natural gas moved up. Natural gas में buy signal मिल सकता है. We are seeing divergence. ये रहा momentum divergence दिख रहा है. We don't have a buy signal, but it can come soon. 125 मिनट में buying is there. एक jump हुआ है आज नेचुरल गैस में। ये जो ब्यूटीफुल लेवल्स था इसका ब्रेक हुआ है। डबल टॉप जो लेवल्स यहां पे था, लेट मी मेक इट ब्लू एंड बिग। सो ये लेवल, बट मेन जो इंपॉर्टेंट, इवन इफ नेचुरल गैस राइजेस, देयर आर लेवल्स कमिंग 2.91, देयर आर लेवल्स कमिंग एट दिस। सो आई थिंक नेचुरल गैस जो है, इट्स पॉसिबल कि नेचुरल गैस और ऊपर जाएगा, बट फर्स्ट ये बिफोर इट इंक्रीजेस, उसका स्पीड और स्मूथ राइड देने से पहले इट विल गो सम कंजेशंस के पास थ्रू। आई थिंक इट विल गो थ्रू सम कंजेशंस। वैसे तो एंट्री तो आ चुका है डेफिनेटली, बट स्मॉलर राउंड एंट्री प्रेफर्ड, क्योंकि ऊपर का टाइम फ्रेम जो है इट्स नॉट फुल्ली सपोर्टिंग
getting into natural gas. So overall ये रहा commodity का picture. Crude oil हम लोग देखे, natural gas looking on the buy side. Outlook has been changed. Gold still bearish, no change. Silver bearish but range में जा चुका है. Zinc looks heavy, looks bearish, but overall एक rangish outlook है. मतलब support आ रहा है 274, not big run expected downside. कॉपर एंड एल्यूमिनियम भी रेंज में है. सो ओवरऑल एक रेंजिश पिक्चर ही मुझे ज्यादा दिख रहा है इन द कमोडिटीज, और रादर डायरेक्शनल सेफ्टी मुझे दिख रहा है टुवर्ड्स गोल्ड and towards natural gas. On the opposite, gold towards the downside move, natural gas more towards the upside possibilities. So ये जो comeback दिख रहा है natural gas का, it did a triple bottom. Let me change the color of the chart, the line chart. वैसे line chart का जरूरत नहीं है with this type of candle, but if anyone wants to see, it is visible that there is a triple bottom. But एक ये मेरा allowed consider profit booking in NG natural gas crossing a particular level or something, but I'm not in position, so right now no profit booking right now. So I want here is a possibility, so I would like to have a little more confidence in the natural gas to do significant quantity. But yeah, tracker quantity can definitely be placed to see how this buying that natural gas is occurring, how the buying goes. So that's all, friends. Thank you so much for tuning in. Thank you for watching my video. All the best from my side to your trading. And as always, happy trading.